हेलो फोक्स, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम, जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था, राइट, सो विल बी हैविंग ए डिस्कशन ऑन द सेट ऑफ पॉइंट्स which I have said in my last CEH summary video, right? So in this video we'll be having a thread, or we can say network thread, application thread, and host based thread. Okay, so all the things we'll be having a discussion on that. So हर एक पॉइंट के समरी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर इस वीडियो लेक्चर में आप नए हो, प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस एंड लाइक द चैनल एंड शेयर इट एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स। तो हम शुरू करते हैं नेटवर्क थ्रेड का पहला कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। So what basically information gathering is all about? Then after sniffing and eavesdropping, followed by DNS, ARP poisoning. So all the things will be having a discussion. So if you please make a note. If you are new, then please start making notes on these points so that you will be getting an understanding and whatever sort of in interview basically, right? So whatever things which has been asked, okay, you can collectively answer it, and you can hopefully crack the interview as well, I can even say, right? So information gathering, what actually information gathering is? So it basically collecting the data about a targeted network, or you can say any system, okay, through various techniques, like we can even say reconnaissance, which is one of the most part of or you can say first stage of cyber attack or cyber kill chain also, you can say, followed by scanning, and even we can even say social engineering tactics or methods or methodologies. So attackers use this information to plan the further attacks, I can even say. So that's basically comes with information gathering, which is the first most concept of network threat. Then after sniffing and eavesdropping, what actually sniffing and eavesdropping is meant by? So sniffing and eavesdropping basically क्या होता है कि an attacker interrupts and monitors the network traffic, ठीक है, to capture the sensitive information, जैसे कि हो गया information या फिर password या फिर confidential data, ये सब कुछ sniffing and eavesdropping, okay, ये में आता है, जिसके अंतर्गत यूजुअली सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन या फिर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट ऑफ द नेटवर्क के साथ साथ होता है स्निफिंग एंड ईवरड्रॉपिंग। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएनएस एंड एआरपी पॉइजनिंग। सो डीएनएस एंड एआरपी पॉइजनिंग बेसिकली क्या है? सो इन डीएनएस पॉइजनिंग, अटैकर मैनिपुलेट द डीएनएस server, okay, or even we can say catches to redirects user to malicious websites, जैसे कि ARP poisoning involves letting the ARP table to associated the attacker's MAC address with the IP addresses of a legitimate devices, enabling traffic interruption, ठीक है। ये एक्चुअली डीएनएस एआरपी पॉइजनिंग में बेसिकली आता है, राइट? सो इट इज बेसिकली कम्स अंडर स्नूफिंग, ओके। सो इन स्नूफिंग वी हैव ईमेल स्नूफिंग, वी हैव एआरपी पॉइजनिंग एंड वी हैव डीएनएस स्नूफिंग, ओके। सो दिस, ओके, इसके अंतर्गत बेसिकली आता है नेटवर्क में। उसके बाद मिटिम, सो मैन इन द मिडिल अटैक। सो मैन इन द मिडिल अटैक एक्चुअली क्या है? सो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अटैकर इंटरप्ट्स एंड मैनिपुलेट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। दो पार्टीज के बिटवीन एक्चुअली मैनिपुलेशन होता है डाटा का या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, उनके नॉलेज के बिना, उनके इंटरफेरेंस के बिना, उनके अंतर्गत के बिना, या फिर उनके प्रेजेंस के बिना भी हम बोल सकते हैं, राइट? सो दिस अलाउज द अटैकर टू eavesdrop, alert and inject malicious content into the communication flow without their knowledge, right? So that point of time, even we can say it is been involved in the मिटिम attack. उसके बाद DOS and denial of service attack, और DDoS attack भी हम बोल सकते हैं, okay, denial of service and distributed denial of service attack. So these attacks aims to disrupt or degrade the availability of a network or services by overwhelming it with a flood of traffic or request. Okay, so DOS attacks comes from a single source, while DDoS attack involves multiple sources, okay. So that's all about DOS and DDoS attacks. उसके बाद पासवर्ड बेस्ड अटैक। तो पासवर्ड बेस्ड अटैक्स क्या है? सो अटैकर अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए सिस्टम और नेटवर्क बाय गेसिंग और क्रैकिंग द पासवर्ड। जैसे कि टेक्निक्स इंक्लूड क्या क्या है इसमें? ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, या फिर डिक्शनरी अटैक हो गया, या फिर पासवर्ड स्प्रे अटैक। सो ब्रूट फोर्स अटैक एक्चुअली क्या होता है? सो ब्रूट फोर्स अटैक में डिफरेंट सेट ऑफ पासवर्ड्स का अटेम्प्ट होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स भी हम बोल सकते हैं, राइट? सो कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड अटेम्प्ट्स करता है लॉगिन करने के लिए, मे बी
Okay, maybe he might or she might get the actor, the threat actor may get advancement by continuously drafting or guessing the password, I can say. So this is all about brute force attack. उसके बाद directory attack, dictionary attack में usually जैसे कि हमारा dictionary में क्या क्या है, जैसे कि हमारा A to Z alphabets है, right? So in that form they actually try विद डिक्शनरी. सो अल्फ़ाबेट्स का यूज करके, अल्फ़ाबेट्स का गेसिंग करके एक्चुअली followed by A to B. Okay, so that's how actually, or based upon your names, right? So they actually get that accesses to inject, or to can say to flood, or you can say to formulate an attack also, we can say, right? So that's basically comes under the direction dictionary based attack. उसके बाद पासवर्ड स्प्रेइंग. तो पासवर्ड स्प्रे बेसिकली क्या होता है? पासवर्ड स्प्रेइंग इज ऑल अबाउट गेसिंग द पासवर्ड्स. ओके, पासवर्ड स्प्रेइंग इज ऑल अबाउट गेसिंग द पासवर्ड्स और knowing the passwords from a insider threat. Okay, or from anyone who actually have a very simple, or you can say it a very common password we basically keep, right, according to our names, right? So that basically comes under the password based attacks. उसके बाद firewall and IDS attacks. So firewall and IDS attacks, that's basically what actually it says about. So attackers target the firewall and intrusion detection systems, or IDS, to bypass or disable them. Okay, allowing unauthorized access to the network or to avoid detection of malicious activities. तो ये होता है firewall और IDS based attacks में basically होता है. Session hijacking, हम पढ़ेंगे सेशन हाईजैकिंग के बारे में. सो सेशन हाईजैकिंग बेसिकली क्या होता है कि अटैकर्स टेक्स over an active session between user and a system by stealing or guessing session identities. Okay, allowing this allows them to impersonate the legitimate user and access the sensitive information. ठीक है, ये होता है हाईजैकिंग, सेशन हाईजैकिंग. होस्ट बेस्ड थ्रेड. तो होस्ट थ्रेड्स में एक्चुअली होता है पासवर्ड क्रैकिंग, जैसे कि मालवेयर अटैक्स, फुट प्रिंटिंग, प्रोफिलिंग, आर्बिट्ररी कोड इंजेक्शन और एग्जीक्यूशन, बैकडोर एक्सेसेस, प्रिविलेज एस्केलेशन, ये सब कुछ होता है होस्ट थ्रेड्स में. सो दीज थ्रेड्स, ओके, तो दीज थ्रेड्स टारगेट्स इंडिविजुअल कंप्यूटर और डिवाइसेस विद इन ए नेटवर्क. ओके, दे इंक्लूड मालवेयर इन्फेक्शन, unauthorized accesses and exploitation of vulnerability on the host systems. ओके, वो होता है होस्ट थ्रेड्स. उसके बाद पासवर्ड क्रैकिंग. सो सिमिलर टू पासवर्ड बेस्ड अटैक्स, राइट है, ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रूट फोर्स अटैक हो गया या फिर नहीं तो डिक्शनरी अटैक्स हो गया, ठीक. इसमें पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स भी सेम सिमिलर फैशन भी हम मान सकते हैं, राइट. सो बिकॉज इसमें एक्चुअली क्या होता है कि पासवर्ड क्रैकिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, okay, to guess or crack the password, often through use of automated tools or algorithms. उसके बाद malware attacks. So malware attacks में basically malicious software designed to disrupt or damage or gain unauthorized access to computer systems. Okay, और हो गया जैसे कि हमारा networks. Okay, example जैसे कि include example इसमें क्या क्या include है, जैसे कि हमारा हो गया वायरस हो गया, worms हो गया, trojans हो गया, malwares हो गया, ransomware हो गया, spyware हो गया. सो इंक्लूडिंग मालवेयर अटैक हम मे बी ये भी इंक्लूड कर सकता हूँ कि फाइललेस मालवेयर, ओके, स्पाईवेयर्स, ओके, इसमें इंक्लूडेड है, राइट. उसके बाद रूट किट्स, एक्सप्लॉइट्स, ओके, माल स्पैम, ये सब कुछ बेसिकली आता है मालवेयर का सॉर्ट ऑफ अटैक. रैंसमवेयर भी एक एग्जांपल है, सीनियर एग्जांपल है, ठीक है. उसके बाद फुट प्रिंटिंग. सो व्हाट एक्चुअली फुट प्रिंटिंग इज? सो दिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट नेटवर्क or systems to identify the vulnerability and potential entry point of attack. This includes both passive and active reconnaissance technique. ये होता है फुटप्रिंटिंग. उसके बाद प्रोफाइलिंग, ठीक है, मैं आपको मतलब एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैं इसमें दे सकता हूँ विद समराइज्ड वे, ठीक है. प्रोफाइलिंग में एक्चुअली होता है कि अटैकर्स गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और इवन वी कैन से सिस्टम्स टू क्रिएट डिटेल प्रोफाइल, ठीक है. टू फॉर्मुलेट एन अटैक भी हम मान सकते हैं, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग एंड फिशिंग एक्चुअली होता है, राइट. सो उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट्स. आइडेंटिटी थेफ्ट्स में बहुत सारा है folks. जैसे कि हो गया हमारा कैर्बो रोस्टिंग, ओके, उसके बाद कोड इंजेक्शन में सॉरी कैर्बो रोस्टिंग, मैन इन द मिडिल, मिड टीम अटैक्स, राइट. सो दोज आल बेस्ड कम्स अंडर आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, ठीक है. उसके बाद क्या होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या को क्रेडेंशियल स्टफिंग, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, ठीक है. वो सब कुछ बेसिकली आता है हमारा किस में आइडेंटिटी थेफ्ट्स में एक्चुअली आता है, राइट.
Basically it uses the identity theft to recognize the user and formulate in the form of attacks. Okay, so basically that's gather the information about the user credential, login attempts, from where and how. So those things basically comes under that, right? So it's all about the authentication protocol, I can even say, right? उसमें basically आता है identity thefts. तो उसके बाद arbitrary code injection. So attacker exploit the vulnerability in software or systems. Okay, to execute the arbitrary code. Okay, उसके साथ साथ allowing them to take the control of the system. जैसे कि हो गया steal the data or carry out other malicious actions. Backdoor access में basically होता है कि attacker install hidden entry points और जैसे कि हमारा हो गया backdoor to systems or network to bypass the security control and gain the persistence assistance for further attacks or unauthorized activities. Privilege escalation में similar folks attacker exploit the vulnerability to elevate the privileges or we can even say on systems or network gaining access to restricted network sensitive data or administrative controls. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोड एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन थ्रेड्स, इंजेक्शन अटैक्स, improper data input validation, improper error handling, exploitation management. ठीक है, और लास्ट फाइनली फिशिंग, बफर ओवरफ्लो, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन. ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इन डिटेल. आपको इसमें एग्जांपल के साथ साथ एक शॉर्ट समरी भी दिया है, राइट? कोड इंजेक्शन मतलब क्या है, जैसे कि हो गया हमारा अटैकर एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर or web applications to execute their own code on targeted systems, allowing them to take the control. उसके बाद एप्लीकेशन थ्रेड्स में बेसिकली ये सब कुछ आता है फोक्स. सो एप्लीकेशन थ्रेड्स में एक्चुअली आता है कोड इंजेक्शन इन प्रॉपर, ये सब कुछ, राइट? सो एप्लीकेशन जैसे कि हो गया थ्रेड वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जैसे कि हमारा हो गया वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप प्रोग्राम्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस और इवन वी कैन से मैनिपुलेट द डाटा. सो कोड इंजेक्शन अटैक्स में बेसिकली जैसे ये होता है, और इंजेक्शन अटैक्स में अटैकर insert malicious code or commands input, okay, to manipulate and behave, to manipulate and tamper the data, even we can say, right? So improper data or input validation. So it is all about how the data is properly, how the data is managed, how the data is constantly even constantly is been uh, uh, arranged, I can even say, right? So those basically comes under the data validation and how the data is been inputted with our information, how the data has been given in a very precise manner to understand, and how the data has been conservatively we can say stored, right? So that basically comes under the improper data. जैसे कि uh, followed by this it basically fails, right? What I can even say here that if the data is constantly managed and properly configured and sensitively stored, then how the failure occurs, where the failure occurs, if that failure occurs, that point of time even we can say it is improper data or input validation which basically been needed, right? Improper error handling and exploitation management, that also one of the most prominent part of application threats. So hidden field manipulation. So इसमें actually क्या होता है कि attacker manipulate the hidden files in web forms or even we can say applications to change their various values and bypass the security control or perform the unauthorized actions. That basically comes under the hidden field manipulation, folks. Then after broken session management. So vulnerability in the session management application mechanism can allow the attacker to hijack active sessions, impersonate users, or even we can say uh, gain unauthorized access to sensitive data, right? जैसे कि हो गया उसमें broken session management में, right? उसके बाद cryptography issues में basically आता है the weaknesses algorithm or improper key management. SQL injection is similar to that, and these were the similar security misconfiguration which basically comes under the application based thefts. Okay, so I hope it is very conveyed and precise, folks, with the with the information which has been provided in a short form. ठीक है, तो फिर इस वीडियो में खास करके हम पढ़ाई किए थे which I have already said you that I will be having a short summary on all the topics, जिससे which basically includes host based, network based, and application based threats. So in this is all about today's analysis, folks. Thanks for giving your precious time on this.